Okay, once it is zero, sir, then we are on live. So Okay. I will start in any case. Okay. Okay, we are live again. Good morning, good afternoon, good evening to whichever part of the world you are in. And I think today is one of my those lucky days for which, or rather, I should say, my dream coming true, which perhaps I have visited to this place, which is founded by our guest today 15 years back. So maybe in my adolescent, I would rather say. And this was Sulabh International. So people who are not aware about Sulabh International, which I really doubt, ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान में या बाहर विदेश में भी सुलभ इंटरनेशनल को किसी ने नहीं जाना हो। आज हमारे बीच हमारे जो एमिनेंट गेस्ट हैं वो उनके फाउंडर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेंस ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स टू सर फॉर हिज टाइम फॉर दिस अमेजिंग वर्क दैट यू हैव डन। मैं इस म्यूजियम में 15 साल पहले गई थी एंड I mean, it's mind blowing, and people who are witnessing this show who have not visited this museum must go with their children, with their next generation to see what a contribution, what a vision Sir was having. I mean, during that time, which has taken our country internationally, and which is very, very important for youth to know, to see. This is how our India is progressing by all this kind of selfless contribution by people like Dr. Pathak. Uh, so, sir does not need any introduction, but still, I'll just speak. Uh, I'll take this opportunity to introduce Dr. Bindeshwar Pathak, ji, who was born on 2nd April 1943 in Bihar. After college, Sir joined Bhangi Mukti Scavengers Liberation Cell, a group that was dedicated to celebrate the birthday of Mahatma Gandhi and promoting a more about the integrated society. Sir launched Sulabh International as a philanthropic, human rights, and social welfare organization in 1970. He is a philanthropist and has been doing a lot of charity. He loves the poor people, helping weaker sections of society and the downtrodden from core of his heart. In recent years, he has given a new life to the long-suffering widows of India and provided clean drinking water to the people in Iransic affected areas of West Bengal. Sir's recognition, Sir's awards are immense, and I'll take a little time. It is my immense pleasure to speak about Sir's recognitions and Sir's award, it begins from Padma Bhushan from Government of India in 1991, 23rd Nickel Asia Prize 2018 for Culture and Community in Tokyo, Gandhi Peace Prize from the Honorable President of India, Sri Ram Nath Kovind, 23rd SIS ES Sri Chandrasekhar Saraswati National Lemons Award for Community Leadership in March 2021, and Lal Bahadur Shastri National Award for Excellence in Public Administration, Academics, and Management in 2017. Dr. Pathak has fearlessly demonstrated how you can be the change that you wish to see in the world as dreamt by Mahatma Gandhi. Sir, immense gratitude from us, from entire nation on behalf of my team for this amazing work that you have done. And I'll take a pause with first question of mine, where I think everybody would like to know uh, about your journey of Sulabh International, sir. कैसी थी ये जर्नी? कैसे आपके माइंड में आया एज अ यंगस्टर, जहाँ पे सबका माइंड होता है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, अपने ड्रीम्स को एस्पायर करने का. सो we would like to know that what was that seed in your heart and mind which ideated and conceptualized as Sulabh International. Yeah. Actually, to hear the journey of Sulab, you have to go back to my childhood.
when I was 7 years old, a lady untouchable used to come to my house to deliver the 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 bucket or churning utensils of bamboo, made of bamboo. And when she used to return, my grandmother used to throw water on the ground to purify it. So as a child, I was very curious that in my house, many people come, and grandma does not sprinkle the water to purify the land, but white for particularly. And people used to say, sorry, that she was untouchable. And when she walks on the land, it gets polluted. So the grandma uh, cleans this land for other persons to walk. So I used to, as a child, I was very curious, and I used to touch her with body whenever I was at home, not in school. Nothing used to happen to me. So one day when I was touching her, my grandma saw me touching, and she made a even cry in the family that he has touched untouchable and how he can live with the family. So she asked the neighbor's children to catch hold of me, and she put a lot of cow dung, cow urine in my mouth, and put a lot of dengue water to purify me. So this was the beginning of the to realize the untouchability in the society. Also in my village, my house was a very big house, uh, got built by my grandfather. But it had everything, but no toilet. Even the well it had, so no toilet. So my mother, my grandmother, my auntie, my sisters, all they used to go to outside for defecation in the open, certainly in darkness. And then there was a lady who used to clean night soil, Lady Scavenger. So when I used to go to my school in the neighboring village, I used to see her was carrying a wool sweater on her head. And then I used to ask who was she, and then people used to say, oh, she was humorous scavengers. So that was the problem. So all these problems, I never thought that a time will come that I will have to solve these problems of the society. When I grew, I wanted to be a lecturer in the university and especially in sociology department. But after graduation, I could not secure good marks, and therefore I had to leave the studies and become a school teacher in a high school. From where I passed my matriculation exams. Then, in search of job, as others do, I was searching for a job, and finally I joined
society called Bihar Gandhi Centenary Celebration Committee, a committee which was formed to celebrate the birth century of Mahatma. And that was the year 1968. So there, my general secretary asked me to work to restore the human rights and dignity of untouchables, and also to see how the defecation in the open can be stopped. I said, sir, I'm a Brahmin by birth. And I told my story of my childhood. And I said, sir, how can I work with them? But he said, no, no, I see light in you. You can do it. So this is the beginning of my journey. And in sociology, it was taught to us to build rapport with the communities for which you want to work. So it is coincidence, you can say, from where Mahatma Gandhi started his freedom movement from Champaran. I also went to the same place, in Champaran, and there I stayed in a colony of Hummus Kahindians in Betia town. Lived there for 3 months and had a food with them, talked to them, saw the living conditions and how they should have drink also, so on and so forth. I taught them also. Then I taught them how to do a small farming. All these I did. But the most important thing, the two events happened. One, that one day uh, the in-laws was forcing a newly married girl to go to Betia town to clean toilets. She was crying bitterly, not ready to go. So when I went there, I asked her mother-in-law if she's not ready to go, why are you forcing her? She asked a question from me that if you reply this question, I will leave her. And the question she asked that suppose from tomorrow, if she sells vegetables, who will buy from her hand? And I had no answer. It was a very worst form of casteism or untouchability in the society. But once you are born untouchable, you will die as untouchable. There is no chance of escape. After a few days, another thing happened that a small boy wearing a red shirt, he was attacked by the bull. People rushed to save him. But somebody shouted from the crowd that he belonged to Homer's Kansas colony. Everybody left. Can you imagine this behavior attitude of the society? And we took him to hospital and the boy died. There I took a vow to fulfill the dreams of Mahatma Gandhi. Mahatma himself said, till they clean night soil, nobody will
have food with life. Now, when we start the next thing, one thing I would like to tell you that while I was living in the colony, I went to my in-laws' house. I was married then. And I thought people will happily receive me because I was the son-in-law. But in lieu thereof, my father-in-law was a doctor, rich person. The moment I touched his feet, he shouted very hoarsely, you can say, and said, "What are you doing? You are living with untouchables." People asked me what your son was doing. What should I tell them? Had not been Brahmin, I would have married my daughter to somebody else. And you will wonder to hear from me that when we got the Gandhi Peace Prize of Sulab, for Sulab, sorry, for Sulab, so Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind, he asked for my wife. Had he not married him, then he nobody would married him later on. And my wife always, she doesn't forget to tell me this is the days of Rashtrapati. So the journey was very, very difficult, and it was beyond description, you can say. This untouchability and social discrimination in Indian society was at the peak, the highest order. So this is the beginning of the beginning. If you ask further, I will elaborate. Great. That was without saying, sir. Such journeys are full of challenges. हमें कभी कभी पेरेंट्स को भी जवाब देने होते हैं, स्पाउसेस को भी जवाब देने होते हैं, एंड डेफिनेटली ये जर्नी एक अकेले की नहीं होती है. डेफिनेटली साथ में जो पार्टनर हैं, फैमिली है, उन सब की भी एक जर्नी होती है. बट यस, एक छोटी सी एज में आई थिंक जो जो टेक अवे है व्यूअर्स के लिए वो ये है, एक छोटी सी एज में 7 years इज अ वेरी वेरी फ्रिजाइल एज. उसमें ये इंसाइट आना ये एंड ये अजीब है. यस ये गॉड गॉड गिफ्ट है. या पॉसिबल. यस, इट इज डेफिनेटली गॉड गिफ्टेड. क्योंकि 7 साल की उम्र में ऐसी सोच आना हर किसी के लिए गॉड नहीं डेवलप करके रखता है. सो सिर्स थॉट of 7 years has taken our world, taken our country, this entire Sulabh International, to a different world altogether, I would rather say. So Sulabh International has definitely set some benchmarks in our country, and I'm sure while interacting with the गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में, इंटरनेशनली लेके जाने में, फंड्स के सिलसिले में काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे कि एनजीओ इस लेवल तक लेके आना इतना आसान काम नहीं है. सो इस सिलसिले में आपकी आपके क्या चैलेंजेस थे या आपकी क्या स्टोरी थी? बिकॉज अभी पैंडेमिक में हमारे सारे एनजीओज, कितने सारे एनजीओज हैं जो कि अब ड्राइड अप हो गए हैं, उनका वो विजन नहीं होता है, या वो शायद जज्बा नहीं होता है जो कि शायद आपका है. इनफैक्ट आई वुड नॉट से था. सो वी वुड लाइक टू नो कि स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट करने में, इस छोटे से सुलभ को सुलभ इंटरनेशनल बनाने में क्या क्या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट्स, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स थे? सबसे पहली बात तो ये कि महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि जब तक ये मैदान ढोएंगे इनके साथ खाना कोई नहीं खाए. 1934 में
महात्मा गांधी ने ब्राह्मण्स एंड अपर कास्ट के लोगों को बुलाया था भुवनेश्वर में 1934 और वो लोग खाने के लिए आए। जब खाने का टाइम हुआ, डिनर टाइम हुआ, तो सबने कहा गांधी इनके साथ हम नहीं खा सकते। तो गांधी ने वहां लिखा है कि इंडियंस आर रेडी टू फेस द बुलेट्स ऑफ द ब्रिटिश बट अनएबल टू ईट विदाउट टचिंग। तो ये जो कहानी है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, क्योंकि और सब जो सोशल वर्क है, सोशल रिफॉर्म्स है और डिफरेंट लोगों के, उसमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। पर इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी का आवश्यकता है। और इसीलिए 1935 में जब मुल्कराज आनंद ने किताब लिखी अनटचेबल, उसका प्रीफिक्स लिखा इसलिए क्या कहते हैं एम फोस्टर ने। और उसने लिखा कि भाई ये छुआछूत मिटाने के लिए और इसके हेंजरस को इस काम से निकालने के लिए कोई त्याग तपस्या नहीं चाहिए, सिर्फ एक फ्लश शौचालय चाहिए। और फ्लश शौचालय जब ये हो जाए तो ये प्रथा जो है दूर हो सकती। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, चूंकि अब समय 1 घंटे सब हो नहीं पाएगा, फिर मिलेंगे, फिर आपसे बात होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना, जिस टेक्नोलॉजी के चलते, टेक्नोलॉजी के नहीं होने के चलते उन लोगों को कमाओ पकाने को माथे पर रखकर ढोना पड़ता था। वो यदि इसका आविष्कार हम न किए होते तो आज भारतवर्ष से न महिला ढोने की प्रथा समाप्त होती और न ही खुले रूप में शौच करना। तो यहाँ जो देखेंगे जो चेंज हुआ, उस चेंज के पीछे टेक्नोलॉजी जो है सबसे इम्पोर्टेंट। और टेक्नोलॉजी कैसे? वेरी सिंपल, अफोर्डेबल, इंडिजिनस और कल्चरली एक्सेप्टेबल। एक कहावत है, सतसैया के दोहरे और नामक की तीर, देख कर में छोटने लगे खाप करे। ये दो जो पिच है इसमें, एक इस्तेमाल कीजिए, एक बंद रखिए। और ये देखिए जो है ना, ये है। तो अब ये जो आप देखिए, तो अब इसमें क्या है कि एक पिच चालू रखिए, एक बंद रखिए, एक जब भर जाए तो दूसरा चालू कर दीजिए। और पहले में जो पखाना है, उमरस्कीटा है, वो खाद बन जाता है। और ये देखिए खाद है, ये स्मेल फॉर यू। और हम जो सूंघ रहे हैं आपके लिए, ये ह्यूमरस्कीटा है और कुछ नहीं है। तो आज तक जो भी आविष्कार हुए, BBC ने इसको कहा कि सुलभ शौचालय जो है, दुनिया के जो 5 आविष्कार हुए हैं उसमें एक आविष्कार सुलभ शौचालय, ये BBC ने कहा है। तो क्यों कहा है? इसी के चलते कि कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में नहीं ऐसी है जिसमें कि जो मुश्मल है वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। और ये खाद में है कि जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस,
है, पोटासियम है, इसको आप डाल सकते हैं इसमें खेत में उपराष्ट्रपति के लिए। जो पानी लगता है इसमें वो है 1.5 लीटर 1 लीटर। तो इसमें क्या है, ये जो अब देखिए ये 1 लीटर पानी फ्लक्स में आता है। तो अब देखिए कि दुनिया में 7 अरब लोग हैं। इधर हो जाता है, इधर करो, इधर करो, इधर। अच्छा ठीक है, ये ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि 7 अरब लोग हैं दुनिया में, और गुना इंटू कर दिए 10 लीटर, तो 70 अरब लीटर हुआ। और उसी में यदि 1 लीटर हुआ पर लीटर, तो 7 अरब लीटर हुआ। तो इतना पानी का सेविंग इसमें। दूसरा क्या है कि इसमें जो गैस पाइप नहीं होता है, इसमें अब देखिए जनरली गैस पाइप देखी होंगे आप टॉयलेट सब में, इसमें गैस पाइप नहीं होता है, और गैसेस आर अब्सॉर्ब्ड इन द सॉइल। तो उससे क्या होता है कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है, एंड हेंस द क्लाइमेट चेंज। पानी का विषय भी हो गया आपका, खाद भी हो गया, और ये जो क्लाइमेट चेंज आजकल हर बात में चलता है, क्लाइमेट चेंज, उसमें भी हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है पहला, कि जो हमने ये किया। इसी के रिलेशन में जो अब वो जो लोग निकले इस काम से उसको बताते हैं, तो दूसरा क्यों किया है हमने, जो पब्लिक टॉयलेट बनाया हमने, फोटो है नहीं, तो पब्लिक टॉयलेट बनाया, तो और दूसरा नहीं, तो पब्लिक टॉयलेट बनाया हमने। तो आप ये देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक टॉयलेट ये है शिरडी में, पंजाबपुर में। 2 लाख लोग इसका डेली इस्तेमाल करते हैं। अगले साल से 4 लाख लोग इस्तेमाल करेंगे। तो 4 लाख शौचालय इस्तेमाल करने का अब तो कोई शौचालय वर्ल्ड में नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि पहला ये शिरडी का, शिरडी है, शिरडी है, ये शिरडी का देखिए। अब ये है कि शिरडी का नाम सुना होगा जरूर आपने। Yes, yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, sir. शिरडी का शौचालय है। Yes. तो पहला क्या हुआ कि हमने घर का शौचालय का आविष्कार किया, और फिर जो महिलाएं जो बाहर जाती थी शौच करने के लिए, उसका अंत हुआ। और जो महिला होती थी महिलाएं, उनका अंत हुआ उससे। एंड देन पब्लिक टॉयलेट से क्या हुआ कि जो स्टेशन जा रहे हो, बस स्टॉप जा रहे हो, पब्लिक प्लेस पर जा रहे हो, जो तीर्थ स्थल पर जा रहे हो, पर्यटन के लिए जा रहे हो, तो ये सब जहाँ जा रहे हो वहाँ कोई सुविधा थी ही नहीं। पहला शौचालय जो बनाया हमने, वो जो था, ये देख, तो ये जो है 1974 में ही बना है। तो इसमें क्या है कि शौचालय बनाया हमने, पानी नहाने का प्रोविजन किया, यूजर्स का, वॉशरूम का, ये सब का हमने प्रोविजन किया, और ड्यूटी लगाया राउंड द क्लॉक। क्योंकि इंडिया में है कि सबसे ज्यादा कि यदि आपने ये नहीं दिया, अब
अटेंडेंस नहीं रखा आपने तो सब लेके चला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात हुई जो हमने अटेंडेंस जो रखा, उससे क्या हुआ कि आज भी सुलभ शौचालय साफ सुथरा लोगों को मिलता है। आज तो शौचालय बहुत हो गए हैं, नहीं टॉयलेट, तो हम इसका नहीं कहेंगे, लेकिन जो सुलभ शौचालय का है, अब उसमें क्या हुआ, उस शौचालय में एक जो दरवाजा बना इसमें, तो उसमें क्या है, एक डोर है, डोर ह्यूमिडिफायर का है। Yeah. तो ये जो है, उसके बाद इसका डोर दरवाजा बना, ये बच्चों के लिए बनाया हमने। ये खेलने के लिए एंड आई थिंक सर ये सभी डिजाइन्स और सब कुछ इस म्यूजियम में भी है, क्योंकि सब मैं है, या मस्त है सब। बिकॉज इसीलिए आई विल जस्ट टेक अ पॉइंट, आई जस्ट एड ऑन अ पॉइंट। जब मैं 15 साल पहले गई थी इस म्यूजियम में, मैं आई वॉज लाइक अमेज्ड कि ऐसा भी हो सकता है। एंड इसीलिए मैं दोबारा इस शो के माध्यम से सभी को बोलना चाहूंगी, स्पेशली जिनके बच्चे अभी एडोलेसेंस एज में हैं, अ, इस विजन को एक इंस्पिरेशन की तरह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया के, भारत के बच्चों के लिए, यूथ के लिए, सो दैट उन्हें ये समझ में आए दैट ये सब चीज़ें जो कभी हम सोचते नहीं है, इससे कितनी सारी चीज़ों का सर ने हेल्प किया है एज अ सोशल रिफॉर्मर, अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग जस्ट सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, बट क्लाइमेट शिफ्ट की जो हम लोग इतनी बातें करते हैं, या जो हम बातें करते हैं बेंचमार्क्स क्रिएट करने की, इस तरीके के यूनिक सिस्टम को बनाने के बाद कितने सारे थॉट्स गए होंगे, कितने सारे ब्रेन्स गए होंगे इस तरीके का एक प्रोडक्ट बना के तैयार करने में, जिसने एक बेंचमार्क क्रिएट किया है एनजीओ इंडस्ट्री में। एंड आई एम श्योर एक बार जब सभी इस म्यूजियम में जाएंगे, जो कि मैं जरूर बोलूंगी जाने के लिए, सबको पता चलेगा कि हर एक पॉइंट जो उस म्यूजियम का है वो आई ओपनर है। है। और वो जो प्रिंसेस है यहाँ की, या थाईलैंड की, यस थाईलैंड की प्रिंसेस जो है, वो 2 बार अपने आई है, और एक बार मिलिट्री से भी उसके चार्ज में थी। तो और जो भी उसके नॉलेज में थाईलैंड से आते हैं लोग, या उनको कहती है कि जाके सुलभ म्यूजियम देखो आप। अमेजिंग सर, You are the second person to recommend like this, कि वहाँ प्राउड पे ऑफ यू जाकर सर। देखिए कि क्या चीज है वहाँ। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि ये तो है कि ये जो बिजली बिजली का कहाँ काम है। इसके आगे देखिए जो है, ये बायोगैस प्लांट है। या ह्यूमन ईटा से तो बायोगैस बनता ही है, लेकिन ये हमने बनाया इससे। आपने चूंकि देखा हुआ है इसलिए आपको पता हो सब होगा। यस और ये देखिए, ये जो है ना, ये चीफ जस्टिस पहले के थे, वो लाइट जला रहे हैं, लैंप जला रहे हैं। लैंप आपके समय में था, मेरे ख्याल से रहा होगी। लेवल्स और ये लैंप था, और इसके बाद जो है, ये अक्षय कुमार जी शायद बाद में आए थे, जब फिल्म बनाई थी इन्होंने, उसके पहले आके देख गए थे सब। तो ये देखिए, ये भी जैसे हम आपके लिए सूंघ रहे थे, वैसे ही और उसके लिए ये जो है लैंप जला रहे हैं। ये है आपको अमित शाह जी, होम मिनिस्टर, वो जला रहे हैं। ये
श्री श्री रविशंकर जी ने योग का शांति हो गया। और ये पापड़ फ्राई कर रहे हैं, तो पापड़ फ्राई कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि ह्यूमन स्पीटा से बिजली बन रही है। तो पूरा है कि आम गुठली का दाम, इसलिए हर चीज को आपने ये कर लिया कि कोई चीज इसमें बचा नहीं। तो बल्ब भी जला रहे हैं, खाना पका रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। इसके बाद जो पानी है, ये बिजली देखिए, ये है पटना में मैंने जलाया था 7 वर्ष बिजली पर, स्ट्रीट लाइट। और ये जो था स्ट्रीट लाइट कहाँ लोग कहाँ है, जो पानी है, ये देखिए जो पानी है ना, ये पानी जो है पब्लिक टॉयलेट का है। देखिए कितना क्लीन है ये। So you can use this as a fertilizer, or you can use for washing your hand after toilet. And if you discharge, you have a disease, there is no chance of pollution. Amazing, ये sir. इम्पोर्टेंट ये है। हाँ, तो ये है कि इसमें आम का आम गुठली का आम, इसमें कोई बचा नहीं, नथिंग लेफ्ट आउट इन ह्यूमन स्पीटा। इसका पूरा, जैसे एक अपने यहाँ एक अन्न है ग्रैम, बूट बोलते हैं हिंदी में, बूट। हाँ, उसमें कितना चीज बनता है, जलेबी बनता है, लड्डू बनता है, कितने चीज बनते हैं। तो इसमें भी सुबह शौचालय में इतने चीज बनता है। तो ये सब हमने सोच के ये हमने किया। अब ये है कि इंडिया में तो कहते हैं खाना नहीं जाएगी, ये आप ही देखा ही होगा। तो ये हाथी जो है इस्तेमाल कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का देखिए ये इम्पोर्टेंट है। ये उषा नंबर 2003 तक महिला हो रही, और उसके बाद 2015 में एक अवार्ड मिला था हमको 80 घाट सफाई करने के लिए, सफाई के लिए अवार्ड फ्रॉम इंडिया टुडे। तो हमने कहा तुम जाकर लो, नहीं आपका अवार्ड मिले जाओ, तुम्हारा श्लोक अवार्ड है, हमारा अवार्ड। तो पहला 2015 अवार्ड मिला इसको। अब देखिए 2021 में ये पद्मश्री मिल गया। आप सुना होगा या देखा होगा? Yes, definitely, sir. अब टचवुड्स को इस काम से निकाल कर, तो माइकल एंजेलो ने एक मूर्ति बनाई थी। वो मूर्ति इतनी सुंदर थी कि लगता था कि हंस दे। तो हमने कहा कि जो हमने मूर्ति बनाई वो उसके जो मुल्सकीटा इत्यादि जो उसके साथ लगे हुए सबको पूछ करके, और हमने जो मूर्ति बनाई है नहीं जिसको कि अब ये राजनाथ सिंह को रसगुल्ला खिला रही है। तो आप सोच नहीं सकते हैं कि समय आएगा कि मैं राजनाथ सिंह को भी रसगुल्ला खिला रही हूँ। तो ये हमने जो सोशल चेंज लाया ना, सैनिटेशन का काम हुआ, सैनिटेशन में घर का हो गया, पब्लिक का हो गया, बायोगैस का हो गया, खाद का हो गया, पानी का हो गया। इस सब के साथ साथ जो है
जो इम्पोर्टेंट है कि सोशल चेंज जो हुआ, सोशल मेकल कहते हैं इसको, सोशल चेंज जो हुआ कि सोसाइटी में ऐसा तो एक सिंबल है, लेकिन इस प्रकार से जो है सोशल चेंज हुआ कि अब ये लोग ब्राह्मण कहलाते हैं अल्बर्ट टॉक में, Yeah. और इनके साथ लोग सबके साथ जाके खाते हैं, बैठते हैं उसी थाली में, उसी गिलास में। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसा भी होता है। तो ये Yeah. इम्पोर्टेंट है इसमें, ये इम्पोर्टेंट है कि हमने सोशल चेंज भी ये लाया, और उसके बाद हमने एक नया थ्योरी दिया है, वो है हॉरिजॉन्टल थ्योरी ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में है वो वर्टिकल है, ब्राह्मण से क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हमने क्या किया कि पूरा हॉरिजॉन्टल थ्योरी दे दिया कि सभी बराबर है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं। So in fact, हॉरिजॉन्टल इसमें मैं हमेशा बोलती हूँ, I'll just take a minute extra that we as a human body born in some family. So I always say like even if I'm like born in Brahmin family, as a Kshatriya, I joined army and did my job as a Kshatriya. As a Vaishya, I am earning my livelihood. And and as a Shudra, definitely my legs are there to take me and to do all the kind of labor work which are required. So I think her segment or her aspect of society is very important. And ये कहीं नहीं लिखा कि क्या elite है या क्या ऊपर है या क्या नीचे है, हर segment की का रोल एंड एवरीथिंग बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यस, there is a very beautiful comment which has come, sir, example of selfless service which you have already given. And इस selfless service के लिए I'll take a minute extra and say that बहुत बहुत sacrifices की ज़रूरत पड़ती है, पर्सनली, प्रोफेशनली, सब फाइनेंशियली, वो तो है। सब लेवल्स में बहुत ज़्यादा sacrifice की ज़रूरत पड़ती है. Sir, I would like to know and let people also know that sir has done a lot for widows of the country as well. सर, आप प्लीज ऑडियंस को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बताइए कि विडोज के लिए आपने क्या काम किया एंड किस तरह से सबको आपने एम्पावर किया. विद्युत की समस्या को सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने टिका, और 1928 में, 1828 में वो कानून पास हुआ था, हाँ, जिसमें कि इनको शक्ति प्रधान दिलाया नहीं है। काफी इसका अपोजिशन हुआ। फिर 1856 में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने Yeah. इस विषय को आगे बढ़ाया, और उन्होंने किया कि शादी के लिए कानून का पास करवाया, ये शादी कर सकते हैं। तो कानून में जो शादी पास करने का हुआ, उसके बाद एक गैप आ गया। तो गैप आने के बाद जब हम इस काम में लगे हुए थे, तो हमें एक पत्र आया, एक संस्था है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये है आपको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी एक बड़ी है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने नालसा को कहा कि कैन यू इंक्वायर फ्रॉम सुलभ, इट्स ए गुड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, and these widows, they beg for the food and other essential items. So can you ask Sula, can they provide food to the widows of Vrindavan? So this is the beginning of the beginning. So this is the story 2012. When I got this letter, then I proceeded to Vrindavan.
The day, if you see the photograph and the video footage, you will not stop your tears in your eyes. And so bitterly they were weeping. And I had to weep also. So talk to them. So then finally they said, I said, okay, what has happened. Now we cannot say anything. Tell me what to do for you. So initially I gave them 1,000 rupees for food. But later on, after 3 months, we started giving 2,000 rupees as a food. Then their dead body is to be chopped and thrown in river Jamuna without any cremation. So I made arrangements for that. And then I asked them, I provided ambulance for them uh, for going to hospital and for treatment and so on and so forth. Then I helped them to study. Because most of them the Bengalis, so they readily agreed to learn. And you see the photographs, how they are writing on the slate and the copy. And when we used to go there, then to rush to show, Baba, see what I have written, how I have written. So they, just like a child, they used to come and tell to show us. And then those who were capable of. So we started giving them vocational training. For the vocational training, we wanted to have a shop. But the shopkeepers of the nearby Vrindavan, they came and said, no, why we want to start? We will buy their products and give them money. I said, okay. Then the other stage again, when the first time we asked them that we can tie the Raksha Bandhan, आधी राखी बांधो लोगों को फिर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी को बनवाया हमने प्रणब मुखर्जी जी को बनवाया तो इस प्रकार से रक्षा बंधन हमने शुरू करवाया और स्टार्टिंग में लोग हिचक रहे थे तो हमने कहा कि जो होना था वो हो गया तुम्हारे पति वापस नहीं आ सकते तो घुट घुट के मरने से क्या फायदा है तुमको भी जीने का अधिकार है यू ऑल्सो हैव अ ह्यूमन राइट एंड दे एग्री टू माय प्रपोजल सो फर्स्ट टाइम they tie Rakhi in my hand and other's hand, and this is how it started. Then came the power, lighting of the lamp. So they started celebrating Deepavali. Then I persuaded them. Now I thought that now they have, so I persuaded them to walk on the ramp. And walking on the ramp, it was totally, you cannot believe that widows agreed to fresh lift and they put up what is called the lipstick. They all put lipstick on their lips. You can just see. Ladies, Manuma and the others. Yes, yes, yes. So they put lipstick on their lips. Now makeup is being made for them, and that's she. So this was totally amazing.
Yeah. Yeah. Then they agreed to have, then I not only job. I persuaded them that they have right to live. Yeah. Why they want to die? Husband has not a practical return. They cannot bring it back. So then finally, this holy, he can, can, because he this. So we also learned to, sorry for the audience, we also learned that individuals walked on the ramp for a fashion show. Yes, So yes. yeah. And this is basically under this, Yeah. and this is now came the whole. ऊपर का पटो खाया ऊपर most of the food. So now let's see. Nobody can think of Indian Yeah. society that women can play or the colors. But I persuaded them that no, you have right to live. I took them to Kolkata and many places, and just to go and see yourself, and so that gave them, you can see a type of encouragement to walk and go. They went to Kolkata. So happily they went, and some went to their homes also, old homes they went and visited. So this way, now what I am trying, that this is not the only story. Yeah. So what I am trying now, that this is also an attitudinal problem. Yeah. Because what happens that you very fine evening, that lady is very happily and going to bed to sleep. And the fine morning, the husband dies and she becomes widow. And then nobody is ready to go near her. Nobody wants to go outside to see her. Yeah. So she becomes untouchable Yeah. in her own family. One story you can believe that Mohini Giri, she is the daughter-in-law of Rashtrapati Giri, Rajendra. And she said there one day, Dr. Pathak, I went to my house and there was a marriage relation. And so my niece came and said, Bua, you can be in this room inside for 2 hours. Marriage is going to take place. And after it is over, I will open for you. She said, Dr. Pathak, the person like me, बड़ा दिल देखकर मेरी डॉक्टर now. And I had to remain confined 2 hours because of the British request. This is the condition of the widows in the country. So now we are trying to uh, change the attitude and behavior of the people, of the entire country. It's not a one-day story for me. Now I have taken a vow to end this practice. And therefore, when the first time I went, I can't tell you how many times I left with them. So this is a very sad story. And I have been working to remove the untouchability and to bring the untouchables on the par with others. They are just like the same, not Yeah. more. They are not by birth True. True. but by behavior of the people.
to own people. So therefore, I just say that one had to combine. I request you to join this movement, and certainly we should also be a pathfinder to change the attitude, the behavior of the people, of the society. That one day is widowhood should So beautifully you have put across, sir, and so simply you have put across, and it's very very true. ये बिलीफ सिस्टम बहुत एक प्रिमिटिव एरा से चले आ रहे हैं, और अब लेकिन जब ऑलरेडी कंट्री हमारा नेशन इतना प्रोग्रेस कर चुका है, आई थिंक ये केवल एक माइंडसेट चैलेंजेस हैं और इनको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे और आपके या हमारे मेरे आपके घर के लिए नहीं, मैं कहती हूँ मैं अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जी चुकी हूँ, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट मी, बट डेफिनेटली जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उसके लिए एक कंट्री जो 75 साल से 75 ईयर्स से अभी भी डेवलपिंग के लेवल में चल रहा है, उसको एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए अब ये जो पुराने प्रिमिटिव एरा से थॉट्स चले आ रहे हैं, उनको उन थॉट्स को बदलने के लिए आउटलुक और एटीट्यूड को बदलना जरूरी है। तभी definitely. तभी I हम जो गवर्नमेंट का गोल है उसको आगे लेके जा पाएंगे। वी कैन नॉट कीप ब्लेमिंग अदर पीपल ऑल द टाइम। हम अपने लेवल में अपने छोटे से एरिया में क्या उसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं। आई थिंक सर ने बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही सिंपली एक ये माइंडसेट चैलेंजेस और माइंडसेट चेंज का बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है, एंड आई वेरी स्ट्रांगली एडवोकेट दैट। thank And you. it's really great because इतना इन्फ्लेशन रेट जब बढ़ चुका है, इतना इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ चुका है, हम इन पुरानी जो चली प्रथाएं हैं इनको लेके अब नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल डाइवर्सिटी और ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स है कंट्री की, इनका हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग करके आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है देश की प्रोग्रेस के लिए। सो अगेन आई मीन जितना आपका थैंक्स और ग्रैटिट्यूड करे सर, इट्स वेरी लेस, बट आई वुड जस्ट लाइक टू seek your insights in giving message to our youth और टू अ यंग entrepreneurs who are budding, क्योंकि अभी मेक इन इंडिया का इतना लहर चल रही है, entrepreneurship की इतनी इतनी लहर चल रही है, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि क्या चीज उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए जो कि कंट्री के लिए भी एक तरह से एग्जाम्पल सेट हो, सोशली भी एक तरह से एग्जाम्पल सेट हो, और इकोनॉमिकली भी एक तरह से एग्जाम्पल सेट हो। सबसे पहले जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसमें अपनी रोटी का इंतजाम करना चाहिए। यू ट्राई हार्ड to earn your bread and then be a strong pillar of the country to make forward India ahead. If you are not yourself capable of, then what you can do about others. So this is my first lesson, that you make yourself very capable of, and then you can deliver something good to the society. You have seen my example. And from rupees, the story he asked, asking from me, that fact could not be discussed, but later on we will do it. So I got 500 rupees for the first time from the Ara municipality in Bihar to build 2 toilets as a demonstration. And I got built 2 toilets. Then the next money came to me 1,000.
And likewise, Dara municipality started giving me 5,000 rupees for a week. The next came Buxar, Buxar municipality, and they started giving me also about 5,000 rupees per week. Then the Municipal Corporation of Patna came forward and they gave some money to build a public toilet. Now just see, I have not received donation or any grant so far from the public, from the government. So suppose I had taken 500 rupees or 1,000 or 5,000 and had not I done the job properly, then why the municipality would have given me the other advance? So my job was very difficult because I had to do my quality job of the money received by me of the municipalities. And then they will give the next advance. And out of that money, now came 1 lakh rupees and 2 lakh rupees. So one by one, the first thing was so difficult for me. Like in Make in India, the youths of today, the solution for them that unless you do proper thing of the money received by you, then why the next advance you will get? So you have to be careful in the process of making that you will have to spend the money taken from the uh, anybody to build whatever work you have to do, not the current only. So the question is that in industrial making, this is a slogan. But to complete the slogan, this is very important that whatever you get money from the government or the public or anywhere, and if you do properly, then you can grow. And Sulab has grown because of this. Had not I done this job, then nobody would have done it. And while doing so, now we have gone through entire country. Now Sulab is working in 26 states of India and 5 Indian territories. So one by one, it grew. So any youth who wants to do work for Make India, whatever you make, that quality should be number one. And then you can say Make in India. If your product is not, this is not good to tell about the country. But there's a country whose they're not delivered. And the problem. So the question is in the making, my suggestion is that if you deliver the goods, you can have a certainly a good, prosperous India for yourself and for others. Amazing insights. What you said is very very right कि मेक इन इंडिया बनाने के लिए खुद को भी सशक्त होना बहुत ज़रूरी है एंड वो ट्रेड्स अपने अंदर लाने बहुत ज़रूरी हैं अ, सबसे पहले इंडिया को अगर हम रख के चलेंगे जनरली लोगों में फियर होता है कि हमारा क्या होगा बट जो भी मैंने देखा है करा है और जब हम करते हुए चलते हैं तो सब साथ में चलते हैं हेल्प मिलता है एंड ऑफ कोर्स a true entrepreneur is
who really builds a nation. And that's what is entrepreneurship altogether. and 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 the honesty and integrity yes, that will go with you. yes, yes, My that's mother, my mother used to say, remain hungry, but do not do stealing in your life. So she used to say that if you get something, you share with the people. So that God has helped you to help someone. If you have gone to temple and you have not helped anybody in distress, then what is the meaning of going to temple? So this is a very valid question. That you say, oh, I have gone to temple and worship God and all this. Okay. Have you helped somebody? No, I have not. Then what is the fun? So this is very what the main things I do not know how many times you have, but what I have, my mother was my guru, and she taught me many things, for which you have no time right now. Maybe next time you can ask me to answer those questions. What mother taught me, and mother is the right teacher. Mother is the right. true, sir. True, That's sir. why, That's what I'm saying. that's why I say that in making India, mothers should come forward. Tell their children that be honest, be sincere, ah, be diligent, and then you can deliver something. Only by delivering a speech, it is not possible. Yeah. Therefore I say, I just repeat, mother is the best teacher. Amazingly said, sir. Very, very true. These values are very important. In values को हमेशा underestimate कर दिया जाता है. But yes, honesty, integrity जब अंदर होती है तो वो अपने आप से reflect होती है. उस तरीके के लोग अपने साथ attach होते हैं. ये ना And हम लोग को 5 रुपया मिला, पहला रुपया 5 रुपया, फिर आराम उसको बेटी आप रिकॉर्ड में लिखिए। yes, sir. तो मान लीजिए कि उस रुपए को हम खा लेते, मान लीजिए या काम खराब कर देते, तो Yeah, दूसरा रुपया क्यों देता हम? तो ये इम्पोर्टेंट है ना कि लोग कहता है नहीं जब तक बेईमानी नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। You know? पहला ही वैल्यू जो है कि हम जब तक बेईमानी नहीं करेंगे जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सफल नहीं होंगे। और लोग सफलता की यही कुंजी है कि तुम क्या सफल हो? yeah, सफलता की कुंजी है कि बी ऑनेस्ट एंड बी मैन ऑफ ऑनेस्टी इंटीग्रिटी। और हम लोग जो आपके सामने बैठे हैं उसी के हम लोग फॉलोअर हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया, न करने दिया। और नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे आपसे फिर क्वेश्चन से पूछिएगा कौन कौन कहानी आपकी है जो बताइए, तो बताएंगे कि क्या क्या कहानी, कहाँ कहाँ से गुजरे हम, कहाँ कहाँ प्रलोभन मिला हमको, कहाँ कहाँ रुपया खाने का मौका मिला। हम कहा नहीं भैया दाल रोटी ठीक है, यही आ गया। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो ये न्यू इंडिया है, मेकिंग इंडिया है, इसमें ऑनेस्टी इंटीग्रिटी सबसे yeah. Very, very true, sir. It is very, very important because I always say, at the end of the day, my sleep is most important. So, अगर मैं कुछ इस तरीके का हम करते हैं, and if you're not able to have a peaceful sleep, I think a crore or some whatever money that is coming to your bank account will not give you in any cost that kind of happiness. And I always say एक scarcity mindset और एक prosperity एक growth mindset, अगर 100 रुपया भी मिल रहा है उसमें से 10 रुपया भी आप किसी को दे रहे हो तो इट विल गिव यू दैट काइंड ऑफ वैल्यूज कि हाँ मैं 10 रुपया दे सकता हूँ या दे सकती हूँ. इट विल मेक यू रिच.
of course. एग्जैक्टली। और अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है और वो 10,000 दे सकता है या दे सकती है, तो इट विल मेक हिम और हर ऑल्सो रिच। तो ठीक देने है। की कैपेसिटी 100 रुपए कमाने वाले की भी है और 10 लाख कमाने वाले की भी है। देने और के लिए बस दिल। देने का जो दिल, हम आपको दिल जो है बोली ना आप, देने का दिल है कि नहीं है, देने का या मन है कि नहीं या है। है तो आपको ही प्रॉस्पर करेगा ये। या यदि आप किसी को देते हैं तो सामने बैठा हुआ है, हम रोटी खा रहे हैं, तो पहले पूछना चाहिए, भैया तुमने खाया है क्या, खाओगे? और हाँ खाएंगे, तो एक उसको दे। उसका इतना संतोष उसमें है, इतना संतोष है, जिसको कि कंपेयर नहीं कर सकते। ट्रू दैट सर। एंड कहीं ना कहीं हम अपने खुशी के लिए करते हैं, क्योंकि जब हम ये करते हैं तो हमें बहुत इमेंस हैप्पीनेस होती है। तो हम कहें कि दूसरों के लिए कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बॉटम लाइन में हमें एक बहुत खुशी मिलती है, और हम एक एक अच्छी डेवलपमेंटल जर्नी और एक इवॉल्व्ड जर्नी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कि सर ने किया। और सर की इमेंस सर्विस ने जो हमको इतना अच्छा प्रोडक्ट लाके दिया कि हम गर्व से कह सकते हैं कि या सुलभ इंटरनेशनल वाज स्टार्टेड बाय अस अच्छा, as in India, ये and the founder is with us, as in as a real gem of the country, as a real jewel of the country. So I definitely take pride in introducing Sulabh International whenever I get the opportunity to interact at an international forum. And immense gratitude once again, sir, अपने busy schedule से निकालने के लिए. This was a long pending interaction with Dr. Bindeshwar Pathak ji, and अपने busy schedule से sir ने time निकाला, और मैंने बहुत enjoy किया इस candid interaction को. I'm sure हमारी जो audience हमारे साथ जुड़ी है उन्होंने भी enjoy किया होगा। और मैंने इसलिए एंजॉय किया क्योंकि मैं ये म्यूजियम देखा है, और मैं काफ़ी एम्प्लॉयज़ के साथ भी, सर के साथ जिन्होंने काम किया उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और इंटरेक्ट करती हूँ। जो सर के वैल्यूज़ हैं वो इनके एम्प्लॉयज़ में भी हैं, वो सिंप्लिसिटी इनके एम्प्लॉयज़ में भी है। एंड दैट्स व्हाट अ लीडर रिफ्लेक्ट्स देयर वैल्यूज़, एंड लीडर रिफ्लेक्ट्स देयर ट्रेट्स, जो कि सर इज़ एन एपिटोम, सर इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। एंड I think there's a lot to learn from Sir's life, from Sir's vision, which has been ideated and conceptualized and executed in the form of Sulabh International. Uh, Sir, thank you so much once again. And thanks to your entire team of Sulabh International who helped us in coordinating this interaction. At a very, very short notice, Sir was away and was traveling. And anything at the end, sir, that you want to say to our audience? it was very enjoying, Thank you, sir. very informative, and also very hilarious also. So, we, uh, we laughed also many times. Yes. So that way, and also it has full of knowledge and Yes. the commitment what you have given to people uh, for the honesty to people. So these are things people should learn and should imbibe, and that will take on to them also. Sir. So therefore, at the end, I would conclude with giving you thanks for inviting me for this honor, for this talk, and I would request you again that whenever you get chance, just tell me. I will be available at the Oh, early sir. to Thank you, sir. Thank you so much, sir. It is going to be my privilege to meet you personally. Definitely, one of my dream coming true. And thank you so much for your time for the entire team. एक बार दोबारा से, and एंड तो करने का नहीं मन कर रहा है, बट या विल हैव टू एंड दिस शो। एंड आई एम श्योर the audience who have connected with us would have thoroughly enjoyed and taken some really insightful leadership lessons
from this interaction. And once again, thank you so much, sir, for connecting with us.